गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयां शतरुद्र संहितायाम् अथ अथेक त्रिंशो अध्याय। नंदीश्वर उवाच। अथ वक्षे मुनिश्रेष्ठ शंभो अवतारकं स्वभक्त दया विप्र नारीसन्धे भञ्जकम् आसीत् सत्यरथो नाम्ना विदर्भविष्य निरपा धर्मात्मा सत्यशीलक्ष महाशैव जनप्रिया तस्य राज्ञ सुधर्मेण महीपाल्यतो मुने महाकालो व्यतीयाय सुखेन शिवधर्मता कदाचित् तस्य राज्ञस्तु शाल्वैक्षपुरोधिभिः महान् रणो बभूवाथ बहुसैन्यर्बलोद्वते स विदर्भनृपा कृत्वा सार्धं दारुणं रणं प्रनष्टोरुबलाशाल वैनिर्हतो देवयोगता तस्मृपे हते युधे शाल्वैस्तु भयविह्वला सैनिका हतशेषाक्ष मन्त्रिभिः सद्रुदुः अथ तस्य महाराज्ञी रात्रौ स्वपुरतो मुने संरुदा रिपुभिर्यन्ता न दन्तवर्तनी बहिर्ययो निर्गता शोकसन्तप्ता सा राजमहिषीशने प्राचिदिशं ययो दूरं स्मरन्तीश पदाम्बुजम् अथ प्रभाते सा राज्ञै ददर्श विमलं सरा अतीता दूरं ध्यवानं दयया शङ्करस्य हि तत्रागत्य प्रिया राज्ञ सन्तप्ता सुकुमारिणी निवासार्थ सरस्तीरे छायावृक्षमुपाक्षयत् तत्र देवर्षाद्रागी मुहूर्ते सद्गुणान्विते असूततन्यं दिव्यं सर्वलक्षणलक्षितम् अथ तज्जननी देवा तृषिताति निरपाङ्गना सरो वर्तीनापानार्थं ग्रस्ताग्राहेण पाथसी ससुतो जातमात्रस्तु शुकपित्पासदीर्तो भृशं रुरोध च सरस्तीरे विनष्टपितृमातृका तस्मिन् वने क्रन्दमाने जातमात्रे सुते मुने कृपान्वितो महेशो भूद्यन्तरामि स रक्षका प्रेरिता मनसा काचिदेशेन त्रासहारिणा अकस्मादागता तत्र भ्रमन्ति भैक्षजीविनी सा तवेकहायानं बालं वहन्ति विधवा निजम् अनाथमेकं क्रन्दन्तं शिशुं तत्र ददर्शः सा दृष्ट्वा तत्र तं बालं वने निर्मुन्नुजे मुने विस्मताति द्विजस्त्री सा चिन्ततं हृदये बहु अहो सुमहदाश्चर्यमिदं दृष्टं मयाधुना असम्भाव्यं मखथ्यं च सर्वथा मनसा गिरा अच्छिन्नाभिन्ननालायोऽयं रसायां केवलं शिशुशिते मात्र विहीनक्ष कन्द्रस्तेजस्विनाम्बरा अस्य पित्रादये केऽपि न सन्तीह सहायेना कारणं किं बभूवाथ हाहो देवबलं महत् न जाने कस्य पुत्रोऽयमस्य ज्ञातात्र कोऽपि न यथा पृच्छाम यस्य जन्म जाता च करुणामयी इच्छमेन पोषितुं हि बालमौरसपुत्रवत् सम्पृष्टं नोत सहे ज्ञात्वा कुलजन्मादि चास्य वै। नन्दीश्वर उवाच इति स चिन्तयमान्यां तस्यां विप्रवरस्त्रियां कृपां चकार महन्ती शङ्करो भक्तवत्सला दध्रे भिक्षुस्वरूपं हि महालीलो महेश्वरा स्वर्था भक्तसुखदो निरूपाधि स्वयं सदा तत्र जगाम सहसा स भिक्षु परमेश्वर यत्रास्ति सन्देहवती द्विजस्त्री ज्ञातुमिच्छति भिक्षुवर्य स्वरूपो सावविज्ञातगति प्रभु तामाह प्रवृत्तां विहस्य करुणानिधि भिक्षुवर्य उवाच सन्देहं कुरु नोचिते विप्रभामिनीमाखिद रक्षेणं बालकं प्रीत्या सुपवित्रं स्वपुत्रकम् अनेन शिशुनाशया प्राप्यस्येन चिरात् परम्
पुष्णहि सर्वथा होनं महातेजस्वनीं शिशुं। नन्दीश्वरुवाच इत्युक्तवन्तं तं भिक्षुस्वरूपं करुणानिधिं सा विप्रवनिता शम्भुभृत्या प्रपच्छ सादरं। विप्रनीतोवाच त्वद्यागेनं बालं हि रक्षिष्यामि स्वपुत्रवत् भोक्ष्यामि नात्र सन्देहो मद्यागत्वे महागत। तथापि ज्ञातुमिच्छामि विशेषेण तु तत्त्वतः कोऽयं कस्य सुतक्षायं कस्तवमत्र समागता मुहुर्मम समायाति ज्ञानं भिक्षुवर प्रभो। त्वं शिवा करुणा सिन्धुस्त्वदत्तोऽयं शिशुः पुरा केनचित् कर्मदोषेण सम्प्राप्तोऽयं दशामिमां। तदुक्त्वा परं श्रेयः प्राप्स्यते त्वदनुग्रहात् त्वन्मायैव साहं वै मार्गभ्रष्टा विमोहिता आगता प्रेषिता त्वत्तो हास्यरक्षण हेतुता। नन्दीश्वरुवाच इति तद्दर्शनं प्राप्तो विज्ञानां विप्रकामिनीं ज्ञातुकामा विशेषेण प्रोचे भिक्षुतनुशिवा। भिक्षुवर्युवाच शिनुप्रीत्या विप्रपत्नी बालस्यास्य पुरोहितं सर्वमन्यस्य सुप्रीत्या वक्ष्यते तत्त्वतो नघे। सुतो विदर्भराजस्य शिवभक्तस्य धीमत अयं सत्यर्थस्यैव स्वधर्मनिरतस्य हि शिनु सत्यरथो राजा हताशालवेरणे परे तत्पत्नी निशिसु यग्रा निर्ययो स्वगृहाद्रुतम् असूततन्यं चैनं समायाता प्रज्ञेत्र हि सरोवरतीर्नातृष्या ग्रस्ता ग्राहीन् देवत। नन्दीश्वरुवाच इति तस्य समुत्पत्तिं तत्पितो सङ्गरे मृतिं तन्मात्र मरणं ग्राहात् सर्वं तस्य न्यवेदयत्। अथ सा ब्राह्मणी चैव विस्मताति मुनीश्वर पुनः प्रपच्छं तं भिक्षुं ज्ञानिनं सिद्धरूपकं। ब्राह्मणोवाच स राज्ञो स पिता भिक्षो वरभोगन्तरैव हि कस्माच्छालवे स्वरिपुभिः स्वल्पे हैक्षविघातिता कस्मादस्य शिशोर्माता ग्राहिणाशु सुभिक्षिता कस्मादनाथोऽयं जातो विबन्धुक्षैव जन्मतः कस्मात् सुतो ममापिह सुदृद्रोही भिक्षुका भवेत् कथं सुखं भिक्षो पुत्रयोरन्नयोर्वद। नन्दीश्वरुवाच इति तस्या वचा श्रुत्वा स भिक्षु परमेश्वरा विप्रपत्न्या प्रसन्नात्मा प्रोवाच विहंसक्षतां। भिक्षुर्वर्युवाच विप्रपत्नी विशेषेण सर्वप्रश्नावधामि ते शृणु त्वं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम्। अमुष्य बालस्य पिता स विदर्भं हि पति पूर्वजन्मनि पाण्डचो सो बभूव नृपसत्तमः स शैव नृपतिर्धर्मात् पाल्य निखिलामहीं स्वप्रजा राज्यामास सर्वोपद्रवनाशना। कदाचित्तस्हि सर्वेषां प्रदोषे पर्यपूजयत् त्रयोदश्यां निराहारो दिवानक्तवर्ती शिवं तस्य पूजयता शम्भु प्रदोषे गिरिशं रते महान् शब्दो बभूवाथ विकटस्वर्थापुरे तमाकर्ण्य रवंसोऽथ राजा त्यक्त शिवार्चन रिपवागमनं शाक्तो निर्ययो भवनाद्वहि। एतस्मिन्नेव काले तु तस्य मात्यो महाबली गृहीतशस्त्रसामन्तो राजान्तिकमुपाययो। त्वं दृष्ट्वा शत्रुसामन्तं महाक्रोधेन विह्वला अविचार्य वृषन्तस्य शीर्षच्छेदं कारयत्। अस्ममाप्यश पूजां तां शुचिर्निष्टधीर्नपा रात्रौ चकार सुप्रीत्या भोजनं नष्टमङ्गला। विदर्भे सौभद्राजा जन्महिनीः शिवव्रती शिवार्चनन्तरायण
रायेण परे भोर्गन्तरे हता तत्पिताय पूर्ववे सोऽसिमञ्जन्मि तत्सुता अहमेव हतैशर्व्य शिवपूजा व्यतिक्रमात् अस्य माता पूर्ववे सपत्नी क्षनाहरत् भक्षिता तेन पापेन ग्राहेणास्मिन् भवेव हि सा एषा प्रवृत्तिरेतेषां भवते परिकीर्तिता अनर्चिता शिवा भक्त्या प्राप्नुवन्ति दरिद्रताम् एष ते तन्यपूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तम प्रतिगर्भर योनिन्य न यज्ञाये धेस्सकर्मभिः अतोद्रादृच्छमापन्न पुत्रस्ते द्विजभामिनी तदोषपरिहारार्थं शरणं शङ्करं व्रज हिताभयां खलु बालाभ्यां शिवपूजा विधियात्मा उपवीतानन्तरं हि शिवश्रेय करिष्यति नन्दीश्वरवाच इति तामुपदिश्याथ भिक्षुवर्यतनुशिवा स्वरूपं दर्शयामास परमं भक्तवत्सला अथ सा विप्र ज्ञात्वा तं शङ्करं प्रभुं सुप्रणम्य हि तुष्टाव प्रेम्णा गदया गिरा तथा स भगवान् शम्भुर्धृतभिक्षु तनुर्धृतं पश्यन्त्या विप्रपतन्यास्तु तथैवान्तर्धीयत अथ तस्मिन् गते भिक्षो विश्रभता ब्राह्मणी च सा तं भर्कं समादाय सस्वपुत्रा गृहं ययो एकचक्राहवे रम्ये ग्रामे कृतनिकेतना स्वपुत्रं राजपुत्रं च वरानैक्षव्य वर्धयत् ब्राह्मणे कृतसंस्कारो कृतोपनयनोचितो विवृधाते स्वगेहे च शिवपूजनतत्परो तौशाण्डिल्यमुनेस्तात निदेशान्यमस्थितो प्रदोषे चक्रतु शम्भो पूजां कृत्वा व्रतं शुभं कदाचिद्द्विजपुत्रेण विनाशो द्विजनन्दना नद्या स्नातुं गता प्राप निधानकलशं वरम् एवं पूज्यतो शम्भुराजदिज्यकुमार्य यो सुखनैव व्यतीयाय तयोर्माचस्तुष्टयम् एवमर्चयतो शम्भुः भूयोऽपि परयामुदा संवत्सरो व्यतीयाय तस्मिन्नेव तयोर्गृहे संवत्सरे व्यतिक्रान्ते स राजतनयो मुने गत्वा वदनान्तरे विप्रेण शिवस्यानुग्रहादिभो अकस्मादागतां तत्र तदा दत्तातजनकेनः विवाह गन्धर्वसुतां चक्रे राज्यं कण्टकं या विप्रवनिता पूर्वं तं पुष्णात् स्वपुत्रवत् सैव माता भवत्तस्य स भ्राता द्विजनन्दन इत्थमाराधये देवेशं धर्मगुप्ताव्यसवय विदर्भविष्य राज्ञात्या भोगं चकारः भिक्षुवर्यावतारस्ते वर्णितक्षमयाधुना शिवस्य धर्मगुप्ताहन्नृपबालसुप्रद एतदाख्यानमनघं पवित्रं पावनं महत् धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं सर्वकामदं य एतच्छृणु या नित्यं श्रावयेद्वा समाहिता स भुक्तेहाखिलान् कामान् सोऽन्ते शिवपुरं व्रजेत् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्रुसहितायां भिक्षुर्व्यवहारः शिव अवतार वर्णन चरित्र वर्णन नाम 31 अध्याय।